We need to, I think, mute some of us. Okay, so in today's world, when we say that this is the fast moving world, rapidly evolving world, education is not simply about acquiring knowledge. So we need not to just focus. Of course, they need to learn, they need to take the information, but they need not to only focus on the knowledge which is there in the textbook, but they need to develop the skills. We all know that, right? They need to develop the skills and understanding necessary to navigate complex situations and solve real world problems. I'll give you example which we all are actually going around while we see this reel which is very much available on any social media forum, that the child is or an adult with an engineering degree is not able to change the bulb or is not able to fix the simple gadgets which are used in the household. So that is where we say we need to navigate complex situations and solve real world problems, and that is possible only when we expose them right in the classroom with in a very subtle way to what they are going to face in the real world. That is why this is called real life connect. Okay, a concept that emphasizes bridging the gap between the theoretical learning and practical application, and is emerging as a cornerstone of effective learning outcome. Uh, you know, there is a lot of theory which I'm telling you. You will say, so you are also doing the same thing. No, you are telling me, you're reading from the slide and you're telling me everything. That is on purpose that I'm telling you, I can teach about real life connect by going through all what is there on these 5, 6 slides. But will it be making any sense? You'll say, okay, there is another, probably a discourse on real life learning, but I'm not really getting to know how will I teach maths into the effect that the child is able to solve real life problems or see maths in whatever they see in and around them. I'll just give you one example. Recently, I had this session where I asked the facilitators, around 140, maybe more than that, that tell me that how many of you have really followed Olympics? Recent, very current thing. So to my surprise, disappointment, only 12 to 15 facilitators, they said, yes, they have followed the Olympics. They said, oh, we don't have time. If we do that, if we discuss that in the classroom, how are they going to, complete the syllabus? How are they going to talk about maths and science, which is more important for exams point of view, right? Uh, but I said, okay, if I tell you the ways that you could have done all what you wanted to do in the classroom with the help of simple discourse on Olympics, right? They said, no, this can happen probably in sports, maybe arts or something, but what about our other subjects which are there for class 11 and 12? Uh, Let me tell you, I could count around 25 subjects which we could have taken care of by just generating that interest in the sports which were happening in the Olympics, right? So let's start counting, right? What are the subjects? First of all, the art and culture, maths and science. And now we'll say, how is maths and science related to that? Science, all the streams, physics, chemistry, biology. You talk about any sport, biology is part of that, isn't it? Physics, the very own cricket which we play, or forget about hockey and lesser known sport nowadays, unfortunately, that all the forgive me for this cough, please. That all the trajectories which were there for Virat or all these players to throw the ball or to receive the ball in, that could be one of the very good idea where you could speak about that. See, this is where the fun of playing a game and also physics and the force and throw and also the biology in terms of your muscular strength, which twist and stamina and everything you could have spoken about.
That is what we call about the real life connect. Rather than telling them the same old example, or train is going at this speed and another train is going at that speed, what time they will be crossing each other, or these are the I mean, around 35 years ago I did the same example or the same problem sum when I was writing my maths exam, and unfortunately the same example is there in the exams. How many of you really agree with me? Because I need to know how many of you are with me. How many of you really agree with me when I say that, yes, whatever is happening in the real world can be brought into the classroom? I just want a yes or no. Otherwise, I'll feel I'm talking to the screen only. You can unmute yourself. Please say, how many of you really agree that we could have done that? I can see the chat. Oh, yes. I will love it if you can just say yes, or, that will help me. Otherwise, I will tell Mirnanali to help me with how many yeses we have got in the messages, if at all we have got. Right? So this Yes, is. we have got total 15. Oh, wow. That's good that everybody is agreeing to what we are talking about. And then there were teachers who said, how can we talk about economics, BST, social sciences? So then we said, I mean, we collectively then realized, then when these opening ceremonies and the closing ceremony was going on, French, artist had displayed the entire revolution with the help of all this AI generated effects and all. So then AI was also taken care of, right? So we can ask them that whatever is happening in any event globally or nationally or even in the school, it is something to do with what they are learning in the classroom, right? So we talk about language skills, we talk about all the things which are related to subjects other than, let's say, entrepreneurship. We actually had a, I mean, if you really Google it, you will come to know that there are n number of new products, new businesses which were introduced during this French, you know uh, this Paris Olympics. And then there is a respect Paralympics. We are talking about inclusion, we are talking about respect and differentiation. That is what you can talk about when you are talking about anything to do with your real life connect with the world outside the classroom, right? So this approach aims to create a learning environment that foster the deep understanding and critical thinking. So you are not then looking at the Olympic Games as, okay, how many medals India has won, right? And where we are in terms of tally, or to always talk about, oh, they could have done better, they should not have done this. But do we really critically think about how those 100 grams of weight one of our players could have really reduced by using some of those, your knowledge from the biology, right? That if you take this, the chemistry, maybe whatever is happening in our body in terms of chemicals, can we really have this kind of discussion rather than uh, not disrespecting the players who are putting in so much of effort, right? So the sense of purpose then they will achieve in what you're asking them to do. Nowadays I'm kind of blessed to have a kind of a job where I go and observe the classes, which means I am learning from every facilitator who I am visiting while they are taking the sessions, right? So this helps me to understand what actually is happening in the classroom and what is required to be taken care of. So this is where we realized that real life connect is everywhere, right? One of the teacher was talking about the derivation. See, I am not a subject matter expert of all subjects, but I'm trying to drive the real life connect from all subjects from the real life, right? So physics, we said, can we ask the children, घर में सबके यहाँ घर में चपाती बनती है, राइट? सब लोग चपाती बनते हुए देखते हैं, बट कभी सोचा है कि वो ऊपर वाली लेयर ऐसे कैसे फूल जाती है, और यू नो उसमें कैसे कहाँ से क्या होता है कि वो चपाती
बोलने को हम बोलते हैं अच्छा बहुत भूख लगी है इसलिए चपाती फूल रही है. नो, but then there is a science behind it, and all those experts who are sitting here, those who know what actually is happening in terms of, the layers coming up and then chapati becomes that fluffy and nice to eat. So can we talk about all those things when we are talking about real life connect and some of your physics chemistry in the classroom? Is it possible? Right? So this way you are empowering the children also. You are giving them that kind of competency, which is the core phrase, that competency based skills is the core of NEP. We need to ensure that NEP is not just taken by like a rote, memory thing that we know, all the levels, we know foundational skills, सब कुछ समझ में आ गया. नहीं, हमें उस नॉलेज को क्लास में एप्लीकेशन लेवल तक लेके जाना है. वो जब तक नहीं होगा वो एनईपी सक्सेसफुल नहीं होगी. फिर वो होगा कि जैसे वो सब होता है ना, एक और CCEI और चले गए. आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू दिस? No, we want this to be successful because there's a lot of effort. They're talking about 65 to 68 art forms. But how many of us talk beyond? For example, in Maharashtra, we are going to connect, Pune, we are going to connect with Sikkim. But do we really go beyond that? So we need to understand learners' need. कोई भी बच्चा आपसे जब पूछता है मैं मैथ्स क्यों करूं, मुझे पाइथागोरस की जो थ्योरम है मुझे क्यों सीखना है, मुझे लाइफ में कहाँ यूज होने वाली है, तो हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स होने चाहिए उनको बोलने के लिए. देखो बेटा, आप अगर ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपको सिर्फ फॉर्मूला ही आपकी हेल्प कर देगा. इज एज सिंपल एज दैट. क्योंकि इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, हर एक को थ्योरी समझ में नहीं आती है. राइट? हर एक को डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, आपको उसको करके दिखाना है. अब मुझे याद है कि वॉल्केनो का हमने जब मैथ्स, आई डोंट नो, so many years ago when I did this, तब भी हमने वो फॉर्मूला सेम एक वो बनाया था, उसमें से वो केमिकल्स डाले और वॉल्केनो इरप्ट हुआ. बट बड़ी हैरानी होती कि वही चीज आज भी यूज कर रहे हैं हम. Why we have not progressed beyond those models which were used maybe 50-60 years ago? तो आज के जो जनरेशन है उनको आज की एग्जांपल्स दो, आज के रियल लाइफ की बात बताओ. आज क्या हो रहा है, क्या एडवांसमेंट हो गई है. हम ये नहीं कह रहे कि सबको एआई आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए एज टीचर्स, बट हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम अगर लैंग्वेज स्किल दे रहे हैं बच्चे को तो उसको फायदा क्या होगा. उसको बताना पड़ेगा कि बेटा अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो एक सिंपल सी बात लेती हूँ, आप लोग सब कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं. कितने लोग हैं जो दूसरे लेवल से या तीसरे लेवल के ऊपर तक जा पाते हैं एज एडल्ट्स? बहुत सारे. हम लोग नहीं जा पाते हैं. कारण क्या है कि हमने वो जो रट्टा लगा के एग्जाम दिए थे वो वही की वही रह गई नॉलेज. पर अभी न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, उससे बात नहीं करते हैं, तो वो बच्चों का स्टाइल ही नहीं है. वो बताएंगे नहीं आपको कौन से साल में प्लासी का युद्ध हुआ था या बक्सर का युद्ध हुआ था. वो बोलेंगे मुझसे पूछो कि उससे हमने क्या सीखा. तो आज का एग्जाम्पल जो होना चाहिए वो द वर्ल्ड जो आज का है, रशिया में क्या हो रहा है, हम उसकी बात नहीं करते हैं. तो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट. सो लर्निंग स्टाइल जो है हर इंडिविजुअल का अलग होता है. हम सबको पता है कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, कोई स्पेशल होते हैं, कोई किसी को गा के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करके पढ़ना अच्छा लगता है. तो वो सब हम क्या उस हिसाब से केटर कर रहे हैं. तो मोटिवेशन एंड गोल्स भी होते हैं उनके. जैसे जैसे आप बच्चे को ये समझ में आता है कि मैं पर्पस समझ गया हूँ कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों कर रहा हूँ और मैं इस नॉलेज की वजह से कुछ अचीव कर सकता हूँ, तो वो मोटिवेशन लेवल ऊपर जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सबसे बड़ी बात जो है कि वो जो कल्चरल बैकग्राउंड एंड वैल्यूज, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, पूना में बैठे हुए हैं, और मैं एग्जाम्पल ऐसी जगह की दूं जिसका ना वेदर मैच करता है, ना फेस्टिवल्स का बेसिक जो खाना पीना है वो मैच नहीं करता है, तो देन बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाएगा. अगर मैं यहाँ पे हूँ
और मैं यहाँ की एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, तो मेरे को एग्जाम्पल्स भी यहाँ की देनी पड़ेंगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल देनी पड़ेंगी, यहाँ के फेस्टिवल्स की बात करनी पड़ेगी, यहाँ के पहनावे की बात करनी पड़ेगी। राइट। हम बोल रहे हैं कि एनईपी में कहते हैं कि लोकल इथॉस एंड ग्लोबल जो वैल्यूज है उनको हमने एक ऐसे अच्छे से ब्लेंड में लाना है, पर पहले लोकल रियलिटीज को, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड को समझना, उसको एक्सेप्ट करना, ये भी आना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक वैल्यू सिस्टम है जो हमें समझ में आना चाहिए। तो रियल लाइफ में क्या होता है, तो हम एक गैप को ब्रिज करते हैं जो थियरी में हमें समझ में नहीं आया। आपने कई बार सोचा होगा कि जब हम पढ़ रहे थे हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आए, बहुत सारे फॉर्मूला समझ में नहीं आए, पर जब अब हम पढ़ा रहे हैं आफ्टर रिसर्च, तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, हम उसको अभी रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। राइट। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्टेड है रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, है ना। तो जो आपने कॉन्सेप्ट है उसको आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो, एक नहीं दो तीन चीजों के साथ। दैट्स वाई वो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ट्रांस डिसिप्लिनरी, जिसमें वैल्यू सिस्टम भी है आपका, आपके सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस मैथ को सिर्फ मैथ्स की तरह पढ़ाना है, आप ग्राउंड में चले जाओ और बच्चों को बोलो ठीक है, वी वांट टू कलेक्ट डेटा ऑन हाउ मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन योर स्पोर्ट्स। आप लगाओ, देखो, वो पक्का देख पाएंगे कि देर इज कनेक्ट इन वॉट एवर दे आर डूइंग। यू टेल देम कि अगर आप योगा कर रहे हो तो कौन कौन से एंगल्स पे आपको अपनी आर्म्स एंड लेग्स एंड बॉडी को मूव करना है, ताकि वो एक सिस्टमेटिक हेल्थ जो है वो उनको मिल सके। इफ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को नए आइडिया की तरह क्रिएट करके दूसरे पूरे वर्ल्ड को देते हैं, जैसे बोलते यूज कॉन्सेप्ट्स टू मेक न्यू आइडियाज एंड कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, क्योंकि नाउ द बच्चा जो है वो समझ पा रहा है कि मुझे सिर्फ फॉर्मूला नहीं, इसके अलावा ये एप्लीकेशन भी समझ में आ गई, तो उसके बियॉन्ड जाएगा। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का सबको पता है, राइट। कॉम्प्रिहेंशन लेवल के बाद वो एप्लीकेशन एंड एनालिसिस के लेवल पर तभी पहुंचेगा अगर उसको कॉम्प्रिहेंशन, द सेकेंड स्टेज, ब्लूम्स टेक्सोनोमी को जब तक नहीं समझ में आएगा, उसके आगे वाले स्टेजेस रियली वो क्रिएशन तक तभी पहुंचेगा अगर उसको एनालिसिस एंड एप्लीकेशन हम नहीं सिखाएंगे। Case studies and simulations. So, abhi, this is one good thing which we all have seen in our patterns of examination also, that case study based questions आते हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मानो अगर आपका कोई एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है और उसमें आपको पूरा का पूरा स्टारबक्स का स्टोरी दे दी गई है और बच्चे को बोला गया अभी नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, रादर देन ये कहना कि डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताओ, कुछ ऐसी कंपनीज के नाम बताओ जिनका ये हुआ था। नो, उनको एक आपने केस स्टडी दे दी है एंड यू आर टेलिंग देम टू नाउ इन्फर, वो इंफॉर्मेशन को इस केस स्टडी से निकालो और आंसर की तरह यूज करो। वो तभी होगा अगर हमने उनको ऐसी प्रैक्टिस दी है, ऐसे कनेक्ट करने के लिए उनको ऐसा अंडरस्टैंडिंग दी है। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में सोचते हैं कि शायद वो चीजें मिट्टी हाथ में पकड़ा दी, पानी फील करा दिया, या शायद कुछ ऐसा जो क्लास 1 to 5 के बच्चे करते हैं, दैट इज द ओनली एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन हैपन इन मल्टीपल वेज। You can make the children to experience the place by making them to visit that place. Thankfully, we have Google Maps now. You can bring that place into the classroom and help them experience by navigating with the help of your digital understanding of the place. You can also give them a project where they go research and come back to the classroom and then experience the very purpose of research, बिकॉज रिसर्च जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एक फैक्टर है टू हेल्प देम कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। बिकॉज जो रिसर्च है वो क्लास में बैठे तो होगी नहीं, दे हैव टू गो around, look around the world and bring home or in the classroom their experiences and talk about whatever project you have given them. Now, engaging learners through practical application. Hands-on activity, one of you said very clearly, and I just spoke about technology integration. आप
कुछ भी आजकल तो लाइक आप नाम लो किसी चीज का और उसको आप सिर्फ टाइप करो तो आपके साथ 100 ऑप्शंस होंगे उसके, राइट? तो गेस्ट स्पीकर्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, सॉरी, कोडिंग की बात हो रही थी, राइट? अब बच्चों को सबको शायद अगर वो सब एक्सपीरियंस देना है तो वो यहाँ शायद क्लासरूम में बैठे, यहाँ आईटी लैब में बैठे नहीं दे सकते। सो इट्स बेटर किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बोलिए कि कैन यू जस्ट कम ओवर और टेक द चिल्ड्रन टू द वर्क स्पेस ऑफ दैट पर्सन एंड से ओके, हेल्प अस, what is actually programming, where is it helping you in your workspace, जो हमने कोडिंग सीखी थी वो अभी हमें कहाँ पे हेल्प कर रही है आपको इन प्रोफेशनल लाइफ। तो वो एक कनेक्ट जो एस्टेब्लिश होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स द कोर ऑफ इट, राइट? सो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हम सब बात करते हैं इसके बारे में, बट हाउ मच अपॉर्चुनिटी डू वी रियली गिव देम टू इंक्वायर, राइट? सो एक छोटा सा कोई एथिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ओके, इज इट राइट टू यू नो vote for a person who you have already seen, indulged in multiple kind of, charges and all something. Then you can have a discussion, then you can take your lesson to the civic responsibilities and also entire election system and everything you can talk, but you can start in a different way. You can give an example from the real world, or maybe a snippet from the movies, in your regional languages, or the world is full of these kind of examples, some documentaries. You can say, okay, this is what has happened, right? Even the real life situation, the wars are erupting everywhere. You can give example of, or bring in one picture of some war torn place and say, let us discuss about it. How do you relate with this? What if you are in this situation? So you are making them to ask questions, if not able to speak, but at least to think about those things. Because problem क्या हो गया है आजकल, हम सिर्फ we give them, okay, this is 10 marker, 10 points लिख दोगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे, राइट? 5 मार्कर है तो 5 पॉइंट्स लिखेंगे तो नहीं। पर हम वो ये नहीं सिखाते हैं कि उसमें अपना थोड़ा सा एलिमेंट डालो जिसकी वजह से 5 नंबर तो मिले ही, बट यू शो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज वेयर द एग्जामिनर प्रॉब्ली विल पुट अ स्टार ऑन इट, राइट? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो में क्या होता है, यू चैलेंज देम। एक छोटा सा कोई मशीन उनके सामने खोल के रख दीजिए, you can open their Bluetooth speakers, or maybe if you have some connects with the mechanicals around, कुछ कार ऐसा खोल के जंग पे रख दीजिए और बोलिए let's talk about the mechanics of a vehicle, rather than just I remember when we were in one of the situations where we were told that one bolt of the vehicle was given and said, just tell us where is it going to fit in. And that is possible only if you know the entire diagram and the features of the engine or the system of the mechanics of the vehicle. But I would like to believe that some of our kids know where to fit what, but unfortunately our system is not very conducive for this kind of problem solving scenario, which we urge you all to take care of, which means you need to clarify, you need to question, identify, analyze, evaluate, and create. That is what critical thinking is all about. Debates and discussions. We are very shy to discuss certain things because we feel it probably will become political and religious or something like that. But beyond that, also, there are many debates and discussions which we can have in the classroom from your subject point of view. Ethical ethics in the medicine, in the classroom when you're talking about biology, ethics when you're talking about flyovers, the bridges collapsing and all, what could be the reason. Then there is a physics also, and the language also, which is, you're trying to, or probably you will be able to help them to put forth their points and ideas in a very
known, I'll say, environment, the comfortable environment that where they are not going to be judged, right? In a very generalized way. We need not to target a person or a place or, the scenario there. So we know that this is the learning pyramid, right? And when we say learning pyramid, it is very clear. When you just lecture, only 5% children will understand. The learning retention rate is this, which is really, really, it speaks about all what we are talking about. Actually, 5%, if it is just a lecture, if I am just reading and talking to you, I mean, not even, able to connect with you, then maybe 10%. Audio visual, probably this visual will stay in your mind and you will say, okay, we are not going to have a lecture method only, we'll try and demonstrate or have discussions or some practical experiences. Then you see the learning retention goes from 5% to almost 90% when you are sharing knowledge. Now, I want any one of you to just share with me what is that you have gathered so far from this discussion. Anyone who wants to share anything about so far, whatever we have discussed about, because that will help me to understand whether this is making any sense when we talk about real life connect. Hello, ma'am. Yes, Okay, please. yes, Smita ma'am, you can continue. I will share one Yes. chat. Yes. While teaching, we have to use good content. Of course, content is the king of the knowledge, but what happens around it is also important. Yes, Mrinalini, you were saying something. Yes, actually, Minakshi ma'am, she has shared one chat that she teaches third and fourth grade EVS. And when she was teaching today, that time her topic was evaporation and condensation. So that time she gave the example of the tiffin, that when your mother packs hot food, the students are eager to check their tiffins late and know. So that way she has put condensation and evaporation, the real life connect. She tried to make. See, isn't it interesting? Yes, of This course. will stay in the mind. This will stay in the mind of the child. Oh, this is what those water droplets on in my tiffin, the inside of the lid of the tiffin, is what teacher was talking about. And probably he will or she will go back home and talk about this and imagine what the parent would feel about you and the learning experience of the child. Right? Any other example anybody wants to share? Anyone? Because otherwise I'm only speaking and this is lecture method and I know 5% retention will be there and I want at least 70-80%. Anyone? And share your thoughts, even if you agree, disagree, just share, because that is what is real life about. You need not to agree with whatever is offered to you in terms of knowledge. And I can see everyone here is so learned and I can see the experiences they have. They are all from the backgrounds where they have lot of experience of dealing with the kids. Okay, I'll now ask a simple question. How many of us know about the glasses which we wear? All of us, right? But have we ever tried talking about glasses which are used for farsightedness, nearsightedness, progressive, right? Safeguarding from sun, that those are sunglasses, photochromatic, नाइट विजन ग्लासेस. एक अपने ग्लास को लेके पूरा लाइट का आप अपना जो टॉपिक है ना उसमें यू कैन कवर इट अप. आई रियली फील दैट knowledge is all around us. सब कुछ हमारे सामने है. All what we need to do is to connect the dots and tell the children, आपकी दादी माँ ये यूज करते हैं, आपकी नानी माँ यूज करते हैं, तो इसमें ये है, राइट? देखो मैं यहाँ से रीड भी कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, तो दूर का भी पढ़ रहा हूँ. सो दैट इज प्रोग्रेसिव. एंड नाइट विजन में अलग होता है. योर CCTV कैमराज हैव दैट.
You know, till the time you don't tell them what is that concept you are talking about and where it is to be seen, they'll just feel like that child in तारे ज़मीं के, उसके सामने वो फिगर्स फॉर्मूला सब उड़ते हुए नजर आएंगे, उसको वो कॉन्सेप्ट का इन डेप्थ समझ में नहीं आएगा. दैट मीनिंगफुल कनेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज और उनसे फीडबैक लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया? Let's reflect on this. Lesson is over now. Let's reflect on this. How much is understandable? और कितना इसको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप दो ढूंढ के ला सकते हो. इट्स वेरी, it's interesting for the children. Then, oh, teacher is wanting us to contribute. There is another example which we're talking about. Unfortunately, in each home now there is an elderly or even the young ones have that lifestyle problems. So it's not just the junk food, it's otherwise, the way the life is. Many of us are using some medications. If you are a teacher, facilitator who's talking about chemistry, can we just ask, what all medicines are frequently used at home? Grandma uses for hypertension, or maybe your papa is using something for diabetes and all. What is the configuration? What is the content in that? So what is that chemical from your chemistry? You can just bring and talk about that. What is given to reduce the thyroid problem? What is happening? Biology is all around them, chemistry is all around them, physics is around them. I mean, you just name anything, even for the subjects like I always feel economics is one subject which should be the talk of every home, because the financial literacy is something which we need to talk about. How many of us still feel shaky when we have to fill in the form for a bank account or any kind of a thing? At the moment we open our account, we are so jittery, kahin kuch galat na ho jaye. But are we making our children so savvy and so comfortable and confident and also cautious to do all these day-to-day things with the help of the knowledge which is there in their textbook? Can we just go beyond that question bank of 100 sums and tell them, okay, 50 sums I'm giving, you create 50 more sums from the world around you? That is the connect. I'll just go to a very simple example. One more. I mean, I can just go on and on when it comes to real life connect. Most of the girls and ladies, and nowadays men also go to the parlors, right? What is the chemical used to color the hair, right? What kind of process is there for your pedicures and manicures? Why this chemical is used and why that, how is that, what is used to remove the nail polish? And what is that chemical reaction happening to remove it? Can we just help them think all these things in the real life? Then only we'll be able to say that we are doing some justice with our way of teaching them. Give them group projects which helps them to learn from each other, because probably something which is happening at my place is not happening in other child's place. So they can bring home that experience and say, okay, let's collaborate all the information, and then you become the mentor for some time and then make the mentors out of the children only. You are giving them the collaborative learning experience, which I feel is the need of the hour. No one can work in silos. No subject can be taught as one stream, and another stream. We never thought of that there can be a combination of biology and chemistry initially, biochemistry. We never thought that bioengineering could be put together, right? All the AI related, all your reports which are generated, right? These are all based on the data which is collected, and then all that we are doing today. It is even allowed कि जो कुछ भी आपको पॉइंट्स में याद आ रहा है, यू कैन पुट इट इन द चैट जीपीटी और आपके लिए अच्छा सा एक बढ़िया सा एक एक्सपीरियंस अपने आप में बन जाता है, राइट? स्टोरी करना है तो आप बोल सकते हो, बच्चे क्या माइंड में आ रहा है अगर मुझे स्टोरी लिखना है, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, किसी में भी एक वर्ड
मैप बनाना पड़ता है, वर्ड क्लाउड है. इट जस्ट क्लिक ऑफ द बटन, यू कैन गिव देम दैट वर्ड क्लाउड एंड से ओके चलो अभी बनाओ, एक स्टोरी बना के दिखाओ. आप उनको सिर्फ एक मॉरल दे सकते हो, कहाँ से, एक मे बी न्यूज़पेपर हेडलाइन और समथिंग लाइक दैट, एंड दिस चलो इसके ऊपर स्टोरी डेवलप करो. तो जीके भी आ गया बीच में, थोड़ा सा लैंग्वेज स्किल्स भी आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग भी आ गया, क्योंकि आप स्टोरी ऐसे ही तो नहीं बनाओगे ना. there has to have that there has to be their coherence, right? There has to be some sequence, some plot, some setup. So you are actually creating that very creative experience for the child and helping them to collaborate whatever comes in the mind. We used to play that game. पूरी क्लास में अगर 40 किड्स हैं तो एक बच्चा कोई एक लाइन बोलेगा, उसके आगे की स्टोरी बनाओ, उसके आगे की स्टोरी बनाओ. इट यूज टू बी सो मच ऑफ फन कि एंड में वो स्टोरी कहाँ से कहाँ चले जाती थी. बट द फन वाज दैट वी वर एबल टू रिलेट टू ईच अदर, दैट इसको आगे भी लिख सकते. समटाइम्स फनी भी होती थी, समटाइम नॉनसेंसिकल भी होती थी, बट द आइडिया इज टू कोलैबोरेट. तो हर एक चीज में you need to put in effort as a facilitator, right? I want now some more voices talking about real life examples, because मैंने बहुत सारे examples दिए हैं, मुझे कोई example चाहिए किसी से. मैंने तो I mean ब्यूटी पार्लर तक इंक्लूड कर दिया इसमें, right? So you give me examples from your kitchen, from your the toiletries. साबुन से कैसे मैल निकल जाती है, वो सिर्फ सेंटेंस की उसमें नहीं बताना है, उनको करके दिखाओ. एक गंदा कपड़ा बच्चा, एक छोटा क्लास 5 का अगर अपने सामने धोएगा अपना हैंकी, तो वो देखेगा अरे निकल गया, तो क्या हो रहा है उसमें, व्हाट इज द प्रोसेस, वो करके दिखाना है बच्चों को, उनके सामने करके दिखाना है. हु कैन गिव मी वन एग्जांपल ऑफ दैट काइंड, बिल्कुल जो सामने बच्चों के सामने हर रोज होती है. एक एग्जांपल. Ma'am, when we remove our hands, then it remove the dirt. Then how it removes? It is the live example we can tell to the students. वो उनको बोल तो दिया 5 मिनट तक हाथ धोने, या 3 मिनट जो भी था हमारा कोविड टाइम पर, वो उससे क्या हो रहा है वो अगर हम कर सकते हैं, वेरी नाइस. सुकेशनी, राइट मैम? राइट, थैंक Yes. थैंक यू. एनी अदर? Ma'am, like we can give the example of the baking powder because it's widely used nowadays, like Eno we are using at our home. So we can connect that example while we are teaching the salt part of the acid-based salt lesson. Right. In fact, thank you for that cue, because every process of cooking is all about science, right? वो फर्मेंटेशन से लेके उसको बेक करना, उसको फ्राई करना, या फिर उसको आजकल तो वो एयर फ्राई भी है. How many of really talk about all these evolutions which are happening in terms of air fry? Need to. तो वो Even easy. the use of microwave, also the actually the use of wave to cook the food. So Yeah, so how come the content is nicely heated up, but the container is still okay to be taken from the oven? So all these questions we need to ask them. We need to show them. Otherwise, it's very difficult. A even simple, the yeah. acetone part which is given in the carbon compound, actually if we introduce them that the nail polish remover is having acetone into it, or the sanitizer is having the ethanol Oh into it. yes, yes, yes. I mean, there is so much. There is so much. ये छोटे छोटे बच्चों को अगर आप बताओगे कि वो पेंसिल से कुछ लिखा है, तो इरेजर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो कार्बन जो है वो मिटता जा रहा है. What is that eraser made up of? सब यूज करते हैं, पर शायद बच्चों ने कभी उसको टेक्निकली या वो केमिकली उस हिसाब से देखा ही नहीं, क्योंकि हम उनको हमेशा बड़े बड़े रिएक्शंस की बात करते हैं, वो ही दिखाते हैं. तो बड़े होके फिर वो वही देखते हैं कि अरे भैया यहाँ पे तो सारे सिलेंडर्स वैसे तो नहीं होते हैं, पर वो केमिकल रिएक्शंस तो हमारे आसपास में सब जगह हो रहे हैं,
right? We need to talk about all that, you just tell, okay, there are 5 processes or 5 things which are happening around you. तो हमें वो सिर्फ आप चीजें वो एक्सपीरियंस लेके आओ, then we'll discuss इसमें हो क्या रहा, राइट? इतने बड़े बड़े पहले वो दिवाली के और वो सब लाइट्स होते थे, इतने बड़े बड़े बल्ब, आजकल जिसको फेरी लाइट्स कहते हैं, वो सडनली छोटी छोटी हो गई और खराब भी नहीं होती, वो कैसे हो गया? वो कैसे छोटा सा डॉट जो है वो उतना ही शाइन करता है जितना कि एक बल्ब कर सकता है? डू वी रियली टॉक अबाउट दैट? वी नीड टू, राइट? वो इतना बड़ा स्पीकर, जब अभी अभी आएंगे हमारे फेस्टिवल सारे, तो इतना बड़ा स्पीकर है, उसकी जो वाइब्रेशन से पूरी बिल्डिंग कैसे हिलने लग जाती है? व्हाट इज हैपनिंग इन दैट? Right? How is it possible that you just go through a machine and entire body is scanned? उसमें क्या actually हो रहा है? Can we really talk about that and just not talk about, okay, this is X-ray machine, this is scan, this is this and this is that, but थोड़ा सा go beyond just the definition, just beyond what is written in the textbook. टेक्स्ट में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रेफरेंस के लिए है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि अगर बच्चा क्लास 6 में है, 8 में है, तो इतना तो उसको आना ही चाहिए। और हम हमेशा बोलते हैं अगर इतना भी हम नहीं सिखा पाते तो फेलियर बच्चे का नहीं है, वो फेलियर हमारा है। डू यू अग्री विथ मी कि बच्चे को अगर हम नहीं सिखा पा रहे उसके पढ़ने के तरीके से, उसको रियल लाइफ में वो चीजें दिखाने के साथ, उसको एक एक काइंड ऑफ होता है ना, एक एक्सपीरियंस ऐसा देने की जो हमारी तरफ से कमी रहेगी, उसकी वजह से बच्चा अगर वो 33% नंबर भी नहीं ले पाया, तो फेलियर हमारा है। क्योंकि वी ऑल नो नाउ डेज एवरीथिंग इज वेरी वेरी चाइल्ड फ्रेंडली, एवरीथिंग इज मेड, कंस्ट्रक्टेड, क्रिएटेड कीपिंग द चाइल्ड इन द सेंटर। तो फिर कैसे हो जाता है कि ये असेसमेंट जो है वो फेल हो जाती है, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ऐसे टेस्ट एंड ऐसे क्विज, थोड़ा सा उसमें भी चेंज कर देते हैं, क्विज कर लेते हैं, हमेशा उनको 10 मार्कर नहीं देते हैं। थोड़ा सा कहीं उनका स्किल अगर वो ड्रॉ करके दिखा सकता है तो फेयर है ना, उसमें शायद लैंग्वेज स्किल्स नहीं है वो बच्चा, बट ड्राइंग अच्छी करके आपको बता रहा है पूरा स्ट्रक्चर, विच इज वेरी गुड। पोर्टफोलियोज उनका शोकेस द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, द लर्निंग ओवर द टाइम। तो वो बच्चे को भी समझ में आता है कि अच्छा मैंने अगर अभी इतना किया था तो अगली बार इतना किया, तो उसमें वो नंबर वगैरह प्रायोरिटी नहीं है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड उसके बच्चे के अपने रिफ्लेक्शंस उसमें एडेड। तो वो जो लर्निंग है और उसके जो आउटकम है, दैट बिकम्स वेरी वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड, राइट? सो परफॉर्मेंस टास्क है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि कुछ भी डिबेट हो सकता है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए जहाँ जहाँ पे वो अपनी ऐसी स्किल जो रियल लाइफ से कनेक्टेड है, उस कॉन्टेक्स्ट में है, अगर वो दे कैन शो अस थ्रू सम परफॉर्मेंसेस। हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटीज होते हैं ना, एनुअल फंक्शंस एंड स्पोर्ट्स डे एंड ऑल, उनको एक टिकेबल की तरह कि चलो अभी ये एक थीम बनाया, उसमें ये खत्म कर दिया, बट वो हर इवेंट का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। अगर आपके स्कूल में आजकल जैसे एक्टिविटीज हैं MUN वगैरह, तो उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा सोशली एंड इन टर्म्स ऑफ civics, political scenario, the world, in terms of geographies and historical perspectives, he or she should be aware, ताकि वो उसमें एक ऐसी स्टेटमेंट दे पाए और बोले कि हाँ, आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस कंट्री एंड आई वांट टू टेक दिस प्रॉब्लम। वो सस्टेनेबिलिटी गोल्स की बात हो जाती है उसमें। बट वो हम MUN है या कोई भी ऐसी, आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट वी शुड हैव दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी विच इज वेरी मच प्रेवलेंट। तो वो जब कर रहे हैं स्कूल में, उसकी पर्पस पता होना चाहिए, यही नहीं कि बच्चे फॉर्मली ड्रेसअप होके आए, दे आर टॉकिंग लाइक द डेलीगेट्स एंड ऑल। दैट इज, यस, स्मार्टनेस इज रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, बट नॉट दैट। उसके अलावा कंटेंट में क्या बात करते हैं, बड़ा हैरानी की बात होती है कि बच्चों को आप किसी भी GK का क्वेश्चन देते हो, 2 सेंटेंस से ज्यादा उसके बारे में बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। देर आर सम न्यूज चैनल्स वेयर दे टॉक अबाउट टुडेज प्रॉब्लम विद द कॉन्टेक्स्ट, I mean, almost 10 years ago, what happened and why it is this today. Are we targeting their attention or focusing, helping them to focus their attention to programs like that?
कि या फिर वेट करेंगे जब वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो 2 साल की कोचिंग करेंगे, उसमें सब कुछ सीख ही लेंगे रट्टा लगा के? कांट वी नॉट इक्विप देम कि अभी से वो तैयारी उनको समझ में आएगी, अच्छा मुझे अगर इंजीनियर बनना तो एटलीस्ट मुझे घर में जितने गैजेट्स हैं उसको समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले वो एप्लीकेशन बेस्ड आने वाले, राइट? या फिर अगर मुझे सिविल सर्वेंट बनना है तो मुझे आज पता होना चाहिए ज्योग्राफीज एंड ऑल दैट। एक सिंपल सी बात है, ओलंपिक्स में जो रिंग्स बने होते हैं 5, उनके कलर्स वो कलर्स क्यों होते हैं? कौन बता सकता है मुझे? वो 5 कलर्स ही क्यों होते हैं? हैव यू गॉट एन आंसर मृणालिनी? किसी ने दिया? Wait, I'm just looking. No. No. So, I mean, as per my information, which I read years ago and now brushed up because of this Olympics, thanks to the media, social media, and all, that at least one color from those rings is there in the flag of all the countries in the world. This is the real inclusion, right? Rings are like in such a way that they are close knit, right? This is very, very important that we talk about those small things. We don't just talk about, oh, I mean, those many golds and those many bronze and all. But उस games का history, geography कुछ पता ही नहीं है हमको. Just by discussing Olympics and the history of Olympics, you can talk about entire world history and geography. कहाँ से कहाँ गया सारा वो अपना, the circle of now it's going to be in US. तो थोड़ा सा यूएस का भी समझ में आ जाएगा, फिर शायद होपफुली इंडिया में भी 2036 में होगा, तो फिर हम बात करेंगे रियल लाइफ कनेक्ट की तब, राइट? So far this is what I wanted to tell you all, that इसकी वजह से पूरी जो अप्रोच है वो ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। जो गैप है थियोरी और प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस के बीच में, वो कम करना है, तो रियल लाइफ को प्लीज एम्ब्रेस इट। एंड ये जो अप्रोच है एम्ब्रेस करने के लिए सिर्फ नॉलेज रिटेंशन के लिए नहीं करना है, बट फॉर द लव ऑफ लर्निंग करना है। That is what I wanted to, conclude it here for. With Do let me know if you have any question, anything which you want to, throw light on or want to share with us. Thank you. Thank you. I hope we are within the time limit. Yes, yes. Any questions, teachers? Or any other experience that you would like to share? Okay, in the chat box, I'll be sharing the feedback link. Please do fill in. And can everyone switch on the camera so that we can have a group picture before we just end this meeting? Thank you. There are so many participants, so just, yes. Okay, I'm sharing the link. Thank you. Thank you for turning your cameras. I'm sharing the feedback link. Please do fill in that. And before we end, just give me one moment. I've shared the feedback form link. Okay, and as we wrap up, remember that the key of effective learning outcomes lies in the connection that we build between the theory and the real world. A big thank you to Namrata ma'am for sharing her knowledge, experiences, and insights with us. And also a big thank to all the teachers who are there to bring a change in the young learners. Thank you all for joining us today. And please do fill in the feedback form and let's make most of this learning journey. Just check the feedback link form.
I'm sharing it again because in the chats, there are so many thank you messages dropping in. Okay, so Namrata ma'am, thank you once again. And thank you all the teachers for joining. Thank you. Yes. Thank you so much. God bless you all. Those who have filled in the feedback form, they can just drop out.